Welcome again to this live broadcast in which we are going to talk about astronomical system of units. So let's start without wasting time. So as you know, we have astronomical system of units. Now, astronomical system of units are of two kinds. One is with respect to within the solar system, and that is astronomical unit, which is denoted by AU. It is a symbol for a shortened form of astronomical unit. And the other kind of astronomical system units which is related to outside of the solar system, right? And they are of two categories. One is, we call it light years, and the other one is parsec, right? Now let's talk about in detail one by one. So if we talk about astronomical unit, which is within the solar system, we measure the distance between planets and sun with respect to sun and or earth. So we use mostly this unit AU, and it is the distance from Earth to the sun. Clear? And it is roughly taken 1 AU, or you can write 1 AU. कैपिटल ले लो या स्मॉल ले लो, एक ही बात है, लेकिन ज़्यादातर हम इसे 1 AU मतलब स्मॉल लेते हैं. तो अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है, बीच का जो डिस्टेंस है, इन दिस यूनिट दैट इज 1 astronomical unit. And then we measure other distances between Earth and between Sun and other planets with respect to this 1 AU, which is exactly the distance between Earth and Sun in astronomical unit. Now we also know that we can also measure distances between interplanetary system with respect to sun in kilometer as well. Mercury, for instance, let's say this is your sun, and this is, let's say, the distance between Mercury and Earth. So we have talked in the previous lecture about these things, that is 58 million kilometer. It is in kilometer. Now we don't know the distance in astronomical unit,
but we know the distance between Earth and Sun in million kilometer as well as in astronomical unit, that as we have defined here that it is 1 astronomical unit, 1 AU, and we also know it in million kilometer or kilometer, which is 150 million kilometer, right? So what we need to develop an operation to know the distance between interplanetary system with respect to the Earth distance in astronomical system, in astronomical unit. So you just can take, let's say if we talk about this distance between Mercury and Earth, so you have to divide this number 58 by the distance of Earth to the Sun in kilometer. So you have 150. Then do the required operation. It's just simple division, and you will get the distance in astronomical unit here for Mercury, between the Mercury and Sun. तो यहाँ तक ठीक है, ये सिंपल, मतलब आपने क्या करना है 150, how much time 50 goes, so it is just simple 0, so you have 0 and then subtract, so we get 58, and then again as it is again go to that 0, so we put here 0, so it will, according to rules, we put here point or decimal point again, but it goes again the same, so this become 580, and then again how much time this 150 goes to 580, so 150 2 times 150, that becomes 300, and then 3 times that becomes 480, so 150 times 3 goes to 450. Okay, so again we get the value in subtraction, so subtract, we get 0, and then 588 3, and then 1 again. So now we need to put another 0 here and here as well, according to rules. So how much time this 150 goes to 1300, right? So 150 and that is 480, and then 3, so it is around 450 and then 80, so it is 150 times 8, ठीक है, 150 times 8 becomes 1200, so again we get 100, ठीक है, तो इस हिसाब से हम again we can get 0 and then 0, so how much time, so it has to be 6, so 150 times 6 goes to 100 times, and that is the perfect. So दी आपका जो है ना क्या क्या इसके लिए वैल्यू आ गया, मीन्स के 0.38, हम इसको 6 या 7 कर लेते हैं, 6 है मेरे ख्याल में, ठीक है, as the distance between Mercury and Sun in astronomical unit, which is equivalent to 58 million kilometer in terms of kilometer. Is it clear? यहाँ तक ठीक है ये concept? अच्छा, going ahead and defining this light years, this is what? This is the distance which the light travel in 1 year. मतलब लाइट की जो स्पीड है, लाइट ईयर्स है ना, नाम से ज़ाहिर है, ठीक है, तो इसकी जो स्पीड है वो तकरीबन क्या है, स्पीड हम वेलोसिटी या स्पीड भी कहते हैं, डिनोटेड बाय c, which is equal to 3 times 10 to the 8 मीटर पर सेकंड, राउंड अबाउट 3 लाख किलोमीटर तक बनते हैं, ठीक है,
स्पीड अप्लाइड है या वेलोसिटी अप्लाइड है। तो अगर ये लाइट इसकी स्पीड ये है तो ये एक साल में कितने सफ़र या डिस्टेंस कवर करते हैं। सो दैट्स सिंपल एज रिगार्ड्स टू लाइट ईयर। ठीक है, सो वी कैन सिंप्लीफाई फर्दर and say that it is denoted by light 1 ly, simply ly. So we write that 1 ly is equal to 9.46 times 10 to the 15 मीटर। ठीक है, 1 लाइट ईयर मीटर में इतना है। ठीक है, ये सॉरी क्या कह रही इसको, ये किलोमीटर में है। एंड वी कैन आल्सो से दैट व्हेन लाइट ईयर इज इक्वल टू 9 क्या कह सकते हैं, माइल्स में ले ले, अगर हम माइल्स में ले ले। ठीक है, सो इट इज 5.9 times 10 to the 12 miles, and if you take it in meter, so it is what, it is 9.4 डेटा कुछ आगे पीछे होते हैं। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 times 10 to the 18 meter. ठीक है, it is convertible, you can calculate it. How? By multiplying the value, such as light year की बात है, so light year और फिर year है। ठीक है, तो एक साल में कितनी दिन है, that is simple, you have 365 times days की हिसाब अगर हम ले ली, that becomes 24 times, then we have minutes in hour, that is 60, and then again second in a minute, so that is 60। ठीक है, तो इसी की तरफ अगर हम ये सिंप्लीफाई कर दी रिक्वायर्ड ऑपरेशन, so we get the value according to the nature of यूनिट। किलोमीटर मतलब एक किलोमीटर में कितनी मीटर है और फिर माइल में कितनी किलोमीटर है, उस हिसाब को हमने देखना है। सो वी गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। इज इट क्लियर? आई होप सो। नेक्स्ट वी come to another unit, that is parsec. We also call it पैरेलक्स भी कह सकते हैं इसको हम। एक और नाम भी हम नहीं बल्कि कुछ सर्कल्स, एकेडमिक सर्कल वगैरह कहते हैं, आर्क सेकंड भी कहते हैं इसको। एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय अ ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर in 1913, the idea. So parsec is the distance between big objects in the solar system. For example, the distance between big stars, as we have discussed these things in yesterday's lecture, and the distance between galaxies. So particularly we use this unit when it comes to bigger distances. ठीक है, between the bigger objects. So let's define it. What is it? ठीक है, so we say that it is the, again distance की बात है ना, distance to an object हमारे पास क्या है, स्टार्स है, गैलेक्सीज हैं। ठीक है, इसी का हम डिस्टेंस मालूम करते हैं। द डिस्टेंस टू इन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेफरेंस बना लेते हैं, या स्टार होता है कोई या गैलेक्सी होता है, विद रेफरेंस टू और सन एंड देन अर्थ, क्योंकि हम अर्थ में रहते हैं। सेंटर क्या है, हम है ना, हम मालूम करते हैं। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन।
ओके, whose, ठीक है, द डिस्टेंस टू एन ऑब्जेक्ट whose parallax is 1 arc second, ठीक है, यहाँ तक बस. Now we must understand what is parallax and what is arc second. So understanding these two terminologies is directly linked to understanding the parsec concept. ठीक है, इसको हम लेते हैं. So parallax जो है ना, suppose this is our sun and this is the orbital on which Earth imaginary move around the sun. ठीक है, ये हम है और ये आपका सन हो गया. Now we know the distance between Earth and Sun is 1 AU, जिसको हम b कह सकते हैं, एक वेरिएबल, and we are here. ठीक है, हम यहाँ हैं. विजिबल है ना? This is what Earth and this is Sun, right? And the distance between Earth and Sun in astronomical unit, that is 1 AU, and in terms of kilometer we know that is 150 million kilometer, but here we will consider just 1 AU for the sake of convenience, right? Now as it is mentioned here that the distance to an object, हमने किसी भी चीज़ को रेफरेंस बनाना है, ठीक है, क्योंकि हम जो है ना, या हमने बात की है कि इट इज़ दीज टू यूनिट्स जो है ना, ये ज़्यादातर हम आउटसाइड द सोलर सिस्टम जो चीज़ें हैं, गैलेक्सीज है या स्टार्स है, उसको हम रेफरेंस बना के डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक reference like किसी भी another object, say this is another object, और इसको हम नाम देते हैं कि कोई भी मतलब स्टार, जैसे कि नियर स्टार जो है ना, वो क्या है, या गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, which is the nearest galaxy to our Milky Way galaxy. ठीक है, हमें तो ये डिस्टेंस मालूम है, 1 astronomical unit है, but we don't know this distance. ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये d है, because we don't know. Now we are here in Earth. So पैरेलैक्स का कंसेप्ट इस तरह बनता है, जो इस तरह यहाँ जो एंगल बनता है, इसको हम कहते हैं कीटा. एक एंगल बन गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है. इस तरह भी एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, ठीक है, सीनियर बन के. अब ये ऑब्जेक्ट जो है ना, विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट्स, इसकी आगे भी मतलब और भी डिस्टेंस है ना यूनिवर्स में, जितना हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो हियर वी हैव मोर स्टार्स और गैलेक्सीज, एंड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आई एम जस्ट ड्राइंग इट just parallel to this object so that we get the idea. ये इस तरह है. जब आप यहाँ से ये देखती हो, ठीक है, लेट्स से अगर आप जो है ना, मैं आपको एक यूजफुल एनालॉजी बताता हूँ कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर है ना, आप इसको मतलब बिल्कुल नाक के सामने से तरह पकड़ो, ठीक है, एक आधी फुट के आगे, आधी फुट के पास से भी, तो और फिर जो है ना दाई आँख बंद करो, फिर बाई, तो आपकी इंडेक्स जो है ना आपको मुंह दिखाई देंगे, लेफ्ट राइट. फिर जो है ना दूसरी मरहले पे आप जो है ना अपनी इंडेक्स फिंगर को जो है ना थोड़ा 1 मीटर के पास से पे रखो,
और फिर जो है ना अपनी आंखों को बंद करो, ठीक है, पहले दाई या बाई दाई सारा करो। तो यह जो है जितना आपका जो है ना इंडेक्स फिंगर जो है ना डिस्टेंस बिटवीन योर नोज एंड योर इंडेक्स फिंगर इंक्रीजेस, सो द लेस मोमेंट यू ऑब्जर्व ऑफ योर इंडेक्स फिंगर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व करते हो तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, ये आपको क्या दिखाई देगी, जितना मतलब एक गैलेक्सी एक ऑब्जेक्ट आपसे दूर है उतना जो है ना मोमेंट आपको कम ऑब्जर्व या विटनेस करोगे, ठीक है। दैट्स द मेन कंसेप्ट अबाउट पैरेलैक्स, ओके। तो ये आपका थीटा हो गया। सो वी कैन मेक द रिलेशन हियर, ठीक है, एंड वी से दैट थीटा, this angle or theta is equal to this AU or B. I'm writing just as it is, and then we have D, ठीक है। तो you can understand that this distance is bigger than this distance. The distance between Earth and Sun is smaller than the distance between this Sun and this galaxy. So we say that it is denoted by, as we have written, it is B. So B is very very less than D, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है ना ये वाला डिस्टेंस इससे बहुत छोटा है, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ व्हाट, द वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो द वैल्यू will be, मैं इसको कर देता हूँ, the value will be less than 1, क्योंकि यहाँ 1 के हिसाब से लिया है, D है, ठीक है। जब ये वाला ये छोटा है इससे, तो ये 1 से कम होंगे, ठीक हो गया, ओके। इट सीम एवरीथिंग इज ऑल राइट, ठीक है। और ये क्यों है ये वाला कंसेप्ट, क्योंकि ये मैंने पहले बता दिया कि वो आपकी जो योर इंडेक्स फिंगर विद रिस्पेक्ट टू योर नोज, जितना आप डिस्टेंस ज़्यादा करोगे अपने फिंगर का नोज के मुकाबले में, इतना जो है ना यू विल नोटिस लेस मोमेंट ऑफ योर फिंगर, ठीक है। तो इसी हिसाब से वी से दैट द एंगल इज पैरेलैक्स, क्योंकि इसी वजह से है कि यहाँ जो है ना हमें एक एंगल दिया जाता है जो हम इसको क्या कहते हैं, पैरेलैक्स कहते हैं। एंगल क्या है, पैरेलैक्स है। और इसका मतलब ये हो गया कि द ऑब्जेक्ट जो है ना ये वाला, द ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन इज एट एक्सट्रीम डिस्टेंस, क्योंकि ये मतलब जो डिस्टेंस है ना ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, और जितना बहुत बड़ा डिस्टेंस है उसी हिसाब से जो है ना पैरेलैक्स कम है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस परसेक्ट, कॉन्सेप्ट ये है। अब अर्क सेकंड क्या, ठीक है, ये कंसेप्ट तो ये हो गया। अर्क सेकंड जो है ना ये इट इज द यूनिट ऑफ परसेक्ट, ठीक है। सो we say that simply that 1 arc second of parallax in the displacement of apparent position of an object। तो वही बात है, मगर ये क्या है, ये यूनिट है, किस चीज़ का, परसेक का यूनिट है। और वो बात हम कर चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू 2 लाइन है आपके पास, विद रिस्पेक्ट टू दिस क्या से ऑब्जर्व करती हूँ इस ऑब्जेक्ट को, जितना दूर है विद रिस्पेक्ट टू दिस, क्योंकि सीनियर्स में हमारे पास ये है ना, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो है ना ये हमें मूव करेंगे, ठीक है। With respect to distance, higher the distance, so less you observe the movement of the object or your finger, if you use the analogy, and vice versa. So that's all for today's session, and I hope you get the basic idea. Now if you have any questions, you can write in the comment box and I will address accordingly.
So there is nobody live, it's mean that I should live. So see you then.